Very good morning to all of you. Last time we have started with the topic that is mechanism of hormonal regulation, or how the hormones which are there is regulate the activities of the cell. Okay, so let's study about that. These hormones which are there, these are the chemical messengers, okay, which give message to the cell for its efficient function. Okay? And these hormones are which chemicals? These can be proteins, okay, polypeptide of the protein chain, or it can be small peptide, or it can be amine derivative, barabar, or it can be steroid. Okay, got it. So these hormones which are there, what happens, ये हार्मोन जो है वो रिसेप्टर्स के साथ ज्वाइन होते हैं, got it. And then there is hormone receptor complex which is formed, okay. And because of formation of the hormone receptor complex, there is biochemical reaction which takes place in the target cell. ठीक है. सो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था हार्मोन रिसेप्टर्स का लोकेशन दो जगह पे हो सकता है. आइदर इट इज लोकेटेड ओवर द मेम्ब्रेन, receptor is located over the membrane, or it is present in the nucleus. Okay, means inside the cell. It can be inside the cell or it can be outside the cell. What? Hormone receptors. Okay, got it. So as per the location of the receptors, as per the location of the receptors, there are two types of receptors, that is membrane bound receptors and intracellular receptors. Okay, got it. Membrane bound receptors or intracellular receptors. Getting me? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है? ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. Okay, so can I say membrane bound receptors are also known as extracellular receptors? Extracellular receptors. ठीक है. Intracellular receptors, they are present inside the cell, especially where in the inner side of the nuclear membrane. Okay, got it. So what for these receptors are there? These receptors are for binding the hormones, and whenever the hormones bind to the receptors, then only biochemical reaction takes place in the target cell, depending upon which type of hormone is bound to that receptor. And remember, कोई भी receptor कोई भी hormone को accept नहीं करता है. Okay, hormone receptors are specific. Specific का मतलब क्या है? For example, FSH which is there. Okay, FSH will attach to the receptors which are present over the follicular cells of the ovary. Okay, so ovary के cells के ऊपर जो receptors है उसके ऊपर वो bind होगा FSH, और वैसे फिर changes होंगे ovary में, that is follicles का development होगा. ठीक है. So the receptors which are present over the ovaries, those receptors will be specific for FSH. Okay, those receptors will not bind to LH or any other hormone. Okay, समझ में आया? तो इतना क्लियर है सबको? Right. Mouse.
ठीक है. So next one. Now mechanism of hormonal action. ठीक है. So what is the mechanism of hormonal action that we'll study now? So mechanism of hormonal action में hormones stimulate or inhibit the target cell activity. For example, अगर FSH bind हो गया तो it will stimulate follicular development. ठीक है. इनहिबिट कौन करता है पता है आपको? सोमैटोस्टैटिन हम लोग ने लर्न किया, विच इज अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन. सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? इनहिबिट्स द रोल ऑफ बीटा सेल्स एंड अल्फा सेल्स. बीटा सेल्स प्रोड्यूसेस इंसुलिन एंड अल्फा सेल्स प्रोड्यूसेस ग्लूकागॉन. ठीक है, गॉट इट. सो हार्मोन्स स्टिमुलेट और इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ टारगेट सेल. ओके, एग्जाम्पल मैंने बोला आपको, स्टिमुलेशन का एग्जाम्पल बहुत सारा है. एक एग्जाम्पल मैंने दिया एफएसएच का. इट स्टिमुलेट्स ओवरीज टू प्रोड्यूस सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल एंड ग्राफाइन फॉलिकल. इनहिबिट का एग्जाम्पल दिया सोमैटोस्टैटिन का. सोमैटोस्टैटिन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द डेल्टा सेल्स, okay, of pancreas, islets of Langerhans of pancreas, which inhibit the activity of beta cells and alpha cells. Okay, so isn't it these hormones are doing stimulation as well as inhibition, so it is regulating the activity of the cell. Okay, so और एक बात, FSH follicular stimulation करवाता है, but follicle भी some extent तक develop होता है, after which they will stop development. ठीक है, by because of which hormone? Inhibiting hormone which will be produced by the hypothalamus. Okay, so very important example, it can be the releasing hormones and inhibiting hormones of hypothalamus. ठीक है, ये हो गया. सो नाउ दीज हॉर्मोन्स प्ले अ वाइटल रोल. और क्या करता है हार्मोन? वाइटल रोल प्ले करता है इन रेगुलेटिंग द फंक्शंस ऑफ द बॉडी. बिकॉज सेल का फंक्शन रेगुलेट करेगा तो ऑटोमेटिकली इट विल रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ओवरऑल बॉडी का सब फंक्शनिंग देखेगा वो. ठीक है, then hormones also produce their effect on the target tissue by binding to the specific protein called hormone receptors located in the target tissues only. Okay, so target tissue के ऊपर ही, उसके सेल्स के ऊपर ही रिसेप्टर्स रहते हैं. फॉर एग्जांपल एफएसएच का मैंने बोला आपको, एफएसएच विल ओनली बाइंड टू द हार्मोन रिसेप्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट ओवर द ovary. Okay, it will not bind to any other organ tissue. Okay, any other tissue or else organ. समझ में आया? So specificity रहता है. So effect on the target tissue by binding to the specific proteins called hormone receptors located in the target tissue only. So receptors are, remember receptors क्या रहते हैं? Proteins रहता है. ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है. What are receptors? Proteins, lipids, carbohydrates क्या है? Those are proteins. ठीक है. So mechanism of hormonal action में क्या क्या स्टडी किया अभी तक हम लोग ने? Hormone receptors are specific for the hormones as well as hormones are also specific for the hormone receptors. Okay, and hormones regulate the activity of the body or else functioning of the body. How they regulate? Either they can inhibit or they can stimulate the biochemical reaction in the target cell. Thus, they act as a regulator. Okay, clear है सबको? आगे जाते हैं अभी. Now, हार्मोन रिसेप्टर्स, ये तो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया आपको. हार्मोन रिसेप्टर्स कौन कौन से रहते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स विच आर आल्सो कॉल्ड एज डैश. टेल मी.
मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन को अटैच है, तो सेल के बाहर है या अंदर है? बोलो। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स आर आल्सो कॉल्ड एज डैश. एक्स्ट्रा सेल्युलर रिसेप्टर्स. ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्युलर रिसेप्टर्स. Okay, and the hormone receptors which are present inside the target cell, those are called as intracellular receptors. Okay, अभी extracellular receptors जो है वो कौन से hormones को generally accept करते हैं? They accept the this hormones, that is protein hormones, peptide hormones or polypeptide hormones. Okay, and glycoprotein hormones. These will be accepted by these extracellular receptors. Okay, got it? That is membrane bound receptors का example. Membrane bound receptors can membrane bound receptors को कौन से वाले hormones join हो सकते हैं? Peptide hormone, protein hormone और polypeptide hormone और glycoprotein hormone. Okay, and intracellular receptors को क्या join होता है? Steroid hormones आपको पता है? Steroid hormones, that is estrogen, progesterone, testosterone, all these are the steroid hormones. Then cortisol. Cortisol means what? Do you remember what is cortisol? Which hormone? Cortisol means अरे भूल गए क्या? Glucocorticoids. Glucocorticoids. Okay, so all these are the steroid hormones which will bind to the intracellular receptors. Okay, चलो आगे जाते हैं. Now we'll see in detail each one, that is how the membrane bound receptors which are there, these will regulate the activity of the cell, and how intracellular receptors. Okay. So look at this, whatever I have taught you now, it is mentioned in this chart form. Okay, so at the surface of the cell membrane, these receptors will be present, and which examples I have given you, which hormones will bind to the membrane bound receptors? Protein hormones. Okay, जिसको कि दूसरा नाम हम लोग ने classification में study किया था when we started the chapter, that is peptide or polypeptide. Peptide or polypeptide and glycoprotein hormone. Okay, so these will bind to the membrane bound receptors. Okay, FSH है, LH है. Okay, all these, then TSH तो इधर आएगा. ठीक है, all these will be attaching to these receptors, membrane bound receptors. Okay, intracellular receptors में क्या आएगा? Intracellular receptors inside रहते हैं, and in the nucleus they are located, and these intracellular receptors which are there, to which the steroid hormones will get attached. Steroid hormones में कौन-कौन से देखे? Testosterone, progesterone, estrogen. Estrogen is also known as estradiol. Other name for estrogen, estradiol. Okay. Then other steroid hormone. What is that we have studied? Cortisol. That is glucocorticoid. Cortisol. Okay. Then amino acid derivative. Amine derivative means amine hormones. Amine hormones बता सकते हो कौन से हम लोग ने स्टडी किए थे? Amine hormones. Anybody? Amine hormones which bind to the intracellular receptors which are present inside the nucleus. Yes, right, Neha. Epinephrine and
norepinephrine. Okay, other name for epinephrine and norepinephrine. Other name, adrenaline and noradrenaline. Good, good. Niharika, right? Neha, Tirtha, right. Okay. So amine hormones are also known as, they are also known as amino acid derivative hormones. सिंगल अमाइनो एसिड से डिराइव हुए हॉर्मोन्स है ये, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल लिखते हैं, ग्रीन कलर से लिखती हूँ मैं इसका एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल इज एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। ये दो है, that is adrenaline and noradrenaline. Okay, so look at the diagram. एक मिनट पहले सेव करने दो मुझे। Look at the diagram now. Membrane bound cell receptors में, this is the cell. Okay, these are the hormone receptors. Capillaries means blood में hormones रहते हैं ना, बराबर। FSH बनाया पिट्यूटरी ने, एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, देन उसने ब्लड में छोड़ा वो, राइट, एफएसएच। सो ब्लड कैपिलरी से यहाँ के नजदीक आया, सेल के नजदीक आया। ओके, ओवरीज के सेल के नजदीक आया, एंड ओवरीज के सेल के ऊपर क्या रहता है, ह्यूमन सॉरी हार्मोन रिसेप्टर्स आर देयर, एंड दिस हार्मोन रिसेप्टर्स के साथ ये हार्मोन बाइंड हो जाएगा। ओके, गॉट इट। सो ये हो गया मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स का लोकेशन। Okay, now we'll see the image of intracellular receptor. Look at the diagram. This is the capillary and these are the steroid hormones, any of this. Okay, and through the blood they will reach the target organ. Target organ की यहाँ पे reach हुआ, then they will bind to the receptors. Directly they will enter inside the cell. So plasma membrane उसको रोकेगा नहीं, वो डायरेक्टली एंटर होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हार्मोन जो है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बाइंड टू द हार्मोन रिसेप्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट ओवर द मेम्ब्रेन, बट हार्मोन्स नेवर एंटर इनसाइड। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स सिर्फ बाइंड करते हैं हार्मोन को, बट हार्मोन अंदर नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन है, सोमेटोस्टेटिन है, ओके, देन PP hormone, polypeptide hormone, pancreatic polypeptide hormone, then insulin, okay, glucagon, all these are the hormones. Then FSH, LH, TSH, FSH, LH, all these hormones which are there, these will bind to the hormone receptors. Okay, and they will not enter inside the cell. ओके, इंसुलिन सपोजिंग यहाँ पे बाइंड हुआ तो क्या होगा, इफेक्ट बायोकेमिकल रिएक्शन, व्हाट इट विल टेक प्लेस, which biochemical reaction will occur, glucose from the blood will start entering inside the cell. ओके, मीन्स ये इफेक्ट दिखेगा, इंसुलिन जैसे ही बाइंड होता है ह्यूमन, बाइंड होता है हार्मोन रिसेप्टर के साथ तो भी, ओके, मीन्स बायोकेमिकल रिएक्शन starts taking place because of activation of the enzymes. Okay, अलग अलग enzymes बनने लगते हैं, activate हो जाते हैं, and these activated enzymes will bring about absorption of glucose from the blood inside the cell. Okay, समझ में आया, ये बाहर रहता है, अंदर नहीं जाता। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर में वैसे नहीं है, रिसेप्टर कहाँ पे लोकेटेड है इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स में, इनसाइड द सेल, बराबर। इनसाइड द सेल है तो वो हार्मोन डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म में जाता है, एंड देन इट बाइंड्स टू द रिसेप्टर। ओके, एंड देन देयर इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, एंड लाइकवाइज दैट प्रोटीन इज फॉर्म्ड। ओके, पर्टिकुलर जीन विल बी एक्सप्रेस्ड। समझ में आया आपको? Okay, then intracellular receptors,
which are located in the nucleus of the cell. Okay, these receptors which are there will also bind. They can also bind to the thyroid hormone. Okay, thyroid hormone. याद रखो, thyroid hormones. Okay, T3, T4. So this is all about general information of these two. आगे जाते हैं. So only image यहाँ पे दिया है to explain that. So steroid hormone देखो अंदर जा रहे हैं steroid hormones, and these steroid hormones which are there after they enter inside the cell, ये देखो receptors है, receptor उसको लेके जाता है, hormone receptor complex is formed and it is entering in the nucleus through nuclear pore. Okay, so nuclear pore से अंदर गया और यहाँ पे ये DNA है. Okay, not whole DNA will be transcribed. Only part of the DNA will be transcribed. Okay, means a small segment of DNA means what exactly? Gene. Okay, so this region has to be transcribed. Supposing this is one gene, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये transcribe होगा. क्यों transcribe होगा? Because of binding of this hormone receptor complex to this region only. Okay, so only this region which is there, it will be transcribed. Means DNA से mRNA बनेगा, mRNA से प्रोटीन बनेगा. समझ में आया? Means there is from DNA mRNA is formed, that is transcription, and from mRNA protein is formed, that is translation. Okay, got it. So translation हुआ, प्रोटीन बना, बराबर. प्रोटीन बना इसका मतलब है बायोकेमिकल रिएक्शन will take place now because of formation of that particular protein. Okay, so protein bana hai, that will get activated, and likewise there will be following changes which will take place depending upon which hormone is entering. वो hormone का क्या function है उसके हिसाब से. वही दिया है steps wise, whatever I discussed now. The steroid hormone diffuses through the plasma membrane and binds and to the intracellular receptor. Okay, intracellular receptor के साथ bind होता है, and these receptors which are there, okay, ये bind हो गया ये steroid hormone, इसके साथ receptor hormone complex is formed. This complex will then enter through the nuclear pore and reach towards that region which has to be transcribed. Okay, so the receptor hormone complex binds the hormone and there is likewise transcription. Okay, and mRNA is formed and then translation takes place. mRNA directs protein synthesis. So these proteins which are produced, these proteins are produced by the cells as a response to aldosterone. Aldosterone is also involved in formation of protein by translation. Remember this. Okay. Then hormones play a major role in maintaining homeostasis. Homeostasis means internal environment balance में रखता है वो, बॉडी का इंटरनल जो बॉडी फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोरेगुलेशन वगैरह करवाएगा. सो हार्मोन्स प्ले अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस by their integrated action and feedback control mechanism. Integrated action means, देखो, there is integrated action between the releasing hormones and inhibiting hormones, बराबर, of hypothalamus. Hypothalamus, as well as stimulating hormones which are produced by
produced by anterior lobe of pituitary gland. Pituitary gland. ठीक है? Got it? So isn't it integrated action? Coordinated action है. Releasing hormone secrete होने के बाद stimulating hormones respond करते हैं. Stimulating hormones जैसे ही produce होगा target organ के ऊपर affection होगा. Target cell में biochemical reaction होगा. Biochemical in target cell biochemical reaction will occur. ठीक है. सो ये क्या है? SH मीन्स मैंने क्या बोला यहाँ पे? SH मीन्स स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. एंड एवरीबडी नोज RH एंड IH का क्या है? रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग. सो hormones, isn't it? They are playing important role in regulating the internal environment, keeping the internal environment constant by integrated action as well as feedback control mechanism. Feedback control mechanism, I told you, negative feedback रहता है. अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ तो थायराइड हार्मोन विल गिव मैसेज टू द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के रिसेप्टर के ऊपर ज्वाइन होगा एंड दस hypothalamus will stop producing thyroid stimulating releasing hormone. Okay, and it will start producing thyroid inhibiting hormone. Okay, समझा? So feedback control. सो अभी इन डिटेल देख लेते हैं. हॉर्मोन्स एक्ट इन 2 वेज. सो 2 वेज में हॉर्मोन्स एक्ट होते हैं. ये मैंने वहां पे इमेजेस आपको क्यों दिखाया? बिकॉज दोस इमेजेस आर स्पेसिफाइंग एग्जैक्टली. थोड़ा पिक्चर्स देख के और ज्यादा क्लैरिटी आता है. दैट्स व्हाई वो इमेज मैंने रखा है. और यहाँ पे everything, all the points I have jotted down regarding the mechanism of action of peptide hormones or second messenger hypothesis. Okay, so अभी ये पेप्टाइड हार्मोन कैसे रोल प्ले करता है बायोकेमिकल रिएक्शन होने में सेल में, that will be learning how this peptide hormone has effect over the cell. Okay, so look at this. फुल स्क्रीन दिख रहा है अभी? हेलो, अभी छोटा दिखता है या अभी बड़ा दिखता है? अभी कैसे दिख रहा है? एक ही दिख रहा है ना? ठीक है. सो हार्मोन्स एक्ट इन 2 वेज. उसमें से हम लोग देखेंगे पेप्टाइड हार्मोन नाउ. ठीक है. नाउ दिस इज द पेप्टाइड हार्मोन. इमेजिन कोई भी एक पेप्टाइड हार्मोन, FSH ने तो ग्लूकागॉन, LH और सोमेटोस्टेटिन, एनीथिंग. ओके, सो दिस हार्मोन व्हिच इज देयर, पेप्टाइड हार्मोन, हमेशा याद रखो वो लिपिड इनसोल्युबल रहता है. ओके, एंड वाटर सोल्युबल रहता है. ऑलवेज रिमेंबर, lipid insoluble, okay, water soluble, and these are the primary messengers. okay, जो कि यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे रिसेप्टर के साथ.
तो रिसेप्टर के साथ जैसे ही वो बाइंड हो जाते हैं, look here, what is happening? Receptor is taking the hormone properly and binding it, and likewise hormone receptor complex is formed. Okay, अभी ये कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होता है वो अंदर नहीं जाता है, रिसेप्टर भी इधर ही है, हार्मोन भी इधर ही है. ओके, ये हार्मोन जैसे ही रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है वैसे ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बायलेयर फ्लूइड मोजाइक मॉडल आपने स्टडी किया होगा, तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है ये. दिस इज द इनर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. So towards the inner side of the cell membrane, you can see there will be formation of one secondary messenger. Okay, one secondary messenger will be formed, and that secondary messenger is cyclic AMP. Okay, and likewise many such secondary messengers are there. That is IP3. IP3 is inositol triphosphate. Inositol triphosphate. Okay, and calcium ions. Calcium ions. Okay, so these are the secondary messengers which will be produced on the inner side of the plasma membrane when there is attachment of the hormone to the membrane bound receptors. Okay, and because of this formation of secondary messengers, okay, secondary messenger फॉर्म होता है, वैसे ही यहाँ पे क्या चेंजेस होने लगते हैं फिर. 1 मिनट. सो सेकेंडरी मैसेंजर्स जैसे इनर साइड पे बनने लगते हैं, likewise what is going to happen because of that, these secondary messengers will activate the many enzymes which are needed for that biochemical reaction. Okay, for example respiration करवाना है तो you know very well glycolysis takes place, Krebs cycle takes place, and for glycolysis and Krebs cycle many enzymes are needed. Okay, so set of enzymes will get activated depending upon the type of biochemical reaction which has to be taken place. तो उसको क्या बोलते हैं? Cascade. Okay, so it activates the set of many enzymes. So this is known as what? Cascade. Cascade बोलते हैं उसको. So क्या होता है, ये जैसे ही ये secondary messengers बनते हैं, कौन कौन से secondary messenger बन सकते हैं? कौन कौन से सेकेंडरी मैसेंजर्स बन सकते हैं? साइक्लिक AMP, दैट इज साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, और कैल्शियम आयंस, एंड स्टिल मेनी मोर आर देयर. ओके, सो कौन सा बायोकेमिकल रिएक्शन होना है उसके हिसाब से सेकेंडरी मैसेंजर फॉर्मेशन विल डिफर. ओके, ठीक है. सो इंट्रासेल्युलर हार्मोन मीडिएटर्स दैट इज सेकेंडरी मैसेंजर्स विल बी प्रोड्यूस्ड. ओके, ये कैसे प्रोड्यूस होता है? फॉर एग्जांपल साइक्लिक एएमपी. साइक्लिक एएमपी कैसे प्रोड्यूस होता है? इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम एटीपी. ओके, एटीपी से प्रोड्यूस होता है. एटीपी will get converted into cyclic AMP. Okay, due to activity of one enzyme, and the name of that enzyme is adenyl cyclase. Okay, so adenyl cyclase is the enzyme which will bring about formation of cyclic AMP from ATP. Okay, जैसे ही cyclic AMP बनता है, okay, it will cyclic AMP will trigger formation of protein kinase. Okay, so protein kinase is one enzyme. Protein kinase is one enzyme which will be produced, okay, after formation of cyclic AMP. Okay, जैसे ही cyclic AMP बन जाता है वैसे protein kinase will be formed. Okay, and this protein kinase which is formed then brings about activation of
set of enzymes which are needed for biochemical reaction. Okay, so जो enzymes cell में already है वो enzymes activate हो जाएंगे. Okay, और activate जैसे ही हो जाते हैं वो enzyme वैसे फिर there will be formation of that particular product. Okay, so quick acting hormone से तुरंत एक्टिवेट करते हैं एंजाइम्स को और बायोकेमिकल रिएक्शन फिजियोलॉजिकल रिस्पांस विल बी सीन अकॉर्डिंगली. समझ में आया? All of you understood how peptide hormones act over the cell? हाँ चलिए बोलिए फिर सेकेंडरी मैसेंजर्स कौन कौन से रह सकते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर्स which secondary messengers are produced when there is hormone receptor complex formed? Which secondary messengers can be produced? बोलो. Hello, am I audible to all of you? Yes, IP3, calcium ions, cyclic AMP, cyclic AMP का C small चाहिए, ठीक है? What is IP3? Inositol triphosphate. Inositol triphosphate. Okay? जनरली यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में साइक्लिक एएमपी फॉर्म होता है. ठीक है, साइक्लिक एएमपी कैसे फॉर्म होता है? बिकॉज ऑफ डैश एंजाइम. टेल मी. लिखा है यहाँ पे विच इज दैट एडिनाइल साइक्लेज. एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम. जैसे ही साइक्लिक एएमपी फॉर्म होता है साइक्लिक एएमपी क्या करेगा? व्हाट इज द रोल ऑफ साइक्लिक एएमपी? व्हाट इज द रोल ऑफ साइक्लिक एएमपी? देखो cyclic AMP will activate protein kinase and protein kinase will then activate the set of enzymes needed for physiological response. Okay, so tell me what is the role of cyclic AMP now? Arya, Tirtha, Ashita. Chelsea. Where is Chelsea? Answer. Cyclic AMP brings about activation of protein kinase. हाँ, जय. आंसर नहीं मिल रहा है आज जय से. चेल्सी, ओके राइट. निहारिका राइट. Activation of protein kinase. Okay, then who will tell me the role of protein kinase? Role of protein kinase. Protein kinase will bring about activation of many enzymes, set of enzymes needed for physiological response. Okay. So let's revise it again quickly. फटाफट कर देते हैं. So mechanism of hormone action में first one mechanism of action of peptide hormone और second messenger hypothesis. Okay, जहाँ पे हम लोग learn करेंगे what exactly happens when the peptide hormone binds to the receptors, how they stimulate the cells to function efficiently. Okay, to do the physiological activity. Okay, firstly you should
know that peptide hormones are lipid insoluble, water soluble, and those are the primary messengers. Okay, as they will give firstly message to the cell and then cell will function efficiently. Okay, now, when these peptide hormones such as FSH, LH, somatostatin, glucagon, insulin, or many more polypeptide hormones, when they attach to the membrane-bound receptors, there will be formation of hormone receptor complex. Okay, whenever there is formation of hormone receptor complex here, on the inner side of the cell membrane, there will be formation of secondary messengers. Secondary messengers can be cyclic AMP or IP3, that is inositol triphosphate, or it can be calcium ions. So at a time, uh, one or else many secondary messengers can be produced on the inner side of the plasma membrane. Okay, when it will be produced? When hormone receptor complex is formed. Okay, whenever the secondary messenger, for example, cyclic AMP is formed, what happens? Further physiological response will be generated. For example, if the secondary messenger, that is cyclic AMP, has to be formed, what happens? There will be formation of, firstly, conversion of ATP. cyclic AMP कैसे cyclic AMP कैसे form होता है? Conversion of ATP into cyclic AMP due to activity of adenyl cyclase. Okay, adenyl cyclase will bring about formation of cyclic AMP. Cyclic AMP which will be formed will then bring about formation of protein kinase. Okay, protein kinase will bring about activation of many cellular enzymes which are needed for the physiological activity. ओके, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए जो कुछ भी एंजाइम्स लगता है उसका एक्टिवेशन वो करवाएगा. मीन सेल्युलर एंजाइम सिस्टम, जिसको कि कैस्केड बोलते हैं, cascade. Okay, means set of enzymes will get activated and likewise biochemical response will be generated, that is physiological response. And if the hormone is FSH, ऊपर मैंने FSH लिया था, इसीलिए physiological response कहाँ पे दिखाई देगा? ovaries में. Ovarian growth होगा, इसका मतलब follicular development will take place. Development will occur. ओके, क्लियर है सबको? हम्म, इन आउट नहीं चलेगा मीटिंग में. आज क्या चल रहा है? हम्म, आशिता आप क्यों बाहर गए थे मीटिंग में से? भाव्या, यू टू. भाव्या, ज्वाइन हुए थे पहले आप, बाद में फिर से री एंटर हुए. क्या प्रॉब्लम है? ओके, एनी डाउट्स हियर? आगे जाऊं? बात करो, क्या कर रहे हो? ठीक है, देखो जहाँ पे रेंज आ रहे हैं वहां पे बैठो फिर. एक मिनट.
So above mechanism of action is of peptide, polypeptide and protein hormone, and these are the examples which are specified here. सोमैटोस्टैटिन भी लिख दो वहां पे. हाँ, लिखूं क्या मैं? वेट, I'll write. Somatostatin and PP hormone. So these are the steps which I have explained you, which is given here in properly क्या क्या होता है करके. So और मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स बाहर की तरफ रहते हैं, तो कुछ सम ऑफ द रिसेप्टर्स व्हिच आर देयर दे आर डायरेक्टली प्रेजेंट आउटसाइड. ओके, एंड ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन मींस नॉट एग्जैक्टली आउटसाइड द मेम्ब्रेन, नॉट एग्जैक्टली इनसाइड द मेम्ब्रेन, पूरा ऐसे स्ट्रेच होता है वो बाहर से लेके अंदर तक. ठीक है, पूरा मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है. मेम्ब्रेन कवर करता है. साइटोप्लाज्मिक डोमेन, साइटोप्लाज्मिक डोमेन विच इज देयर साइटोप्लाज्म में रहेगा वो साइटोप्लाज्मिक डोमेन. सो बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन टू द रिसेप्टर्स. सो रिसेप्टर एक्सटर्नल डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन एंड साइटोप्लाज्मिक डोमेन. ठीक है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म. Now steroid hormones and thyroid hormone. Thyroid hormones को दूसरा नाम क्या है? Iodothionin. Iodothionin. Okay, so these steroid hormones आपको तो पता है लिपिड सोल्यूबल रहता है, एक अच्छे से याद रखो. स्टीरॉयड हार्मोन तो आपको डेफिनेटली पता है कि लिपिड सोल्यूबल है, तो पेप्टाइड हार्मोन लिपिड इनसोल्यूबल मींस डेफिनेटली वाटर सोल्यूबल रहेंगे, और ये वाटर इनसोल्यूबल रहेंगे. ठीक है, सो these hormones will directly enter inside the cell. So देखो ये directly inside the cell जा रहे हैं, और यहाँ पे ये रिसेप्टर के साथ फिर वो अटैच हो जाते हैं. यहाँ पे एक रिसेप्टर रहता है, मैंने आपको डायग्राम दिया है पहले वाले इसमें, यू कैन रिफर टू दैट. ओके, सो रिसेप्टर्स हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो फिर अंदर जाता है, और यहाँ पे अंदर जाने के बाद फिर इट विल get attached to only that region of the DNA which has to be transcribed. Okay, so hormone receptor complex binds to the transcription factor and initiate binding. Okay, in turn it it binds to the transcription factors. Transcription factors पता है ना आपको, रो फैक्टर रहता है, सिग्मा फैक्टर रहता है, these all factors के साथ वो bind हो जाता है and it binds to the DNA. Okay, in turn these factors binds to the DNA means hormone receptor complex ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ बाइंड होके फिर ये तीनों के तीनों बाइंड हो जाएंगे जो रीजन में जहां पे प्रोटीन बनाना है. ओके, so supposing यहाँ पे join हो गए, so this DNA part will be transcribed means only this portion will get converted into RNA. Okay, transcription होगा, transcription के बाद translation. So transcription occurs and there will be translation and protein formation will occur to influence the mechanism of recipient cell. Okay, so यहाँ पे याद रखो वहां पे क्या था, वो एक्टिवेट करता है. मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स आर एक्टिवेटिंग they are activating the enzymes. Okay, and steroid hormones brings about formation of new enzymes. What the difference? Membrane bound receptors which are there, they will bring about activation of the enzymes, and intracellular receptors with their hormones will bring about synthesis of new enzymes.
ओके। और मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के जो पेप्टाइड हॉर्मोन्स है, दे आर क्विक एक्टिंग हॉर्मोन्स. पेप्टाइड हॉर्मोन्स आर क्विक एक्टिंग हॉर्मोन्स एंड स्टेरॉइड हॉर्मोन्स आर slowly acting. They act slowly than peptide hormones. Okay. सो नए एंजाइम्स बनते हैं तो उसको टाइम लगता है. सो धीरे धीरे फिर क्या होगा, एक एक एंजाइम बन रहा है, फिर सेट ऑफ एंजाइम्स बनने के बाद फिर क्यूमुलेटिव इफेक्ट दिखाएगा सेल, इसीलिए स्लो इफेक्ट दिखाएगा वो. वहां पे क्या है, ऑलरेडी एंजाइम्स बने हुए रहते हैं सेल में, सिर्फ उनका एक्टिवेशन करना रहता है. यहाँ पे नए वाले एंजाइम्स बन रहे हैं. सो मेनी एंजाइम्स, न्यू एंजाइम्स विल बी फॉर्म which is needed for the biochemical reaction. And once these all enzymes are ready, new enzymes, they will show summative effect or cumulative effect. Okay. So वहां पे cumulative effect नहीं था, याद रखो ये. Any doubts? मेरा आवाज क्लियर है? कुछ वॉइस, आशिता फिर से ज्वाइन करो. ओके, लीव मीटिंग एंड अगेन रीजॉइन. चेंज द प्लेस इन योर हाउस वेयर, जहाँ पे ज्यादा अच्छा नेटवर्क का ये आता है, रेंज आता है, वहां पे बैठो. फीडबैक कंट्रोल ऑफ द एंडोक्राइन हॉर्मोन्स, ये एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी मैंने, सिर्फ पॉइंट्स देख लेते हैं. फीडबैक कंट्रोल, अभी हॉर्मोन्स का स्टडी कर रहे थे हम लोग. ये चैप्टर में क्या लर्न किए, एंडोक्राइन हॉर्मोन्स. ओके, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है. सो देयर हाइपर एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, हाइपो एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, दैट एवरीथिंग वी हैव स्टडीड. ओके. सो अभी ये फीडबैक कंट्रोल की वजह से बहुत सारे सेल का जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो कंट्रोल में रहता है, अदरवाइज विल सफर फ्रॉम मेनी डिसऑर्डर्स. बराबर. सो ये कंट्रोल जो है नॉट ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर डिपेंड है फुल्ली. ओके, इट इज डिपेंडेंट ऑन द नर्वस सिस्टम ऑल्सो. आई होप एवरीवन नोज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फास्ट करता है और इट वर्क्स व्हेनेवर देयर इज स्ट्रेस एंड इमरजेंसी कंडीशन. ठीक है. और पैरासिम्पैथेटिक रेस्टिंग कंडीशन के टाइम नॉर्मल करने का कोशिश करेगा जो इंक्रीज हुआ है हार्ट बीट में. ठीक है. सो नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल में रखता है. सो फीडबैक कंट्रोल ऑफ एंडोक्राइन हॉर्मोन्स, फीडबैक कंट्रोल बाय हॉर्मोन्स. एक तो जो बॉडी का एक्टिविटी है वो नॉर्मल फंक्शनिंग सब सिस्टम्स का क्यों चलता है, बिकॉज ऑफ फीडबैक कंट्रोल बाय द हॉर्मोन्स, दैट इज इनहिबिटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन. देन वो टारगेट ऑर्गन जो हार्मोन बनाता है, थायराइड हार्मोन ज्यादा हो गया तो इट विल हैव रिवर्स इफेक्ट ओवर द हाइपोथैलेमस. बराबर. so that negative feedback which I have explained you in detail. ठीक है. then feedback control by metabolites. metabolites का मतलब क्या है, अभी वही ना, इंसुलिन. फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन बन गया जितना चाहिए उतना. ओके. सो व्हाट विल हैपन, जो इंक्रीज हुआ है शुगर लेवल ब्लड में, दैट शुगर लेवल विच हैज इंक्रीज्ड, ओके, इट विल get balanced. How? Once the insulin will bind to the membrane bound receptors, ग्लूकोज जो है ब्लड में वो सेल्स में जाएगा एंड सेल्स विल स्टार्ट यूटिलाइजिंग दैट. सो ये मेटाबोलाइट जो है, ओके, मेटाबोलाइट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर. मेटाबोलाइट इन द सेंस, अभी सेल को कितना एनर्जी लगता है, जितना ग्लूकोज लगता है उतना वो यूटिलाइज करेगा लेके बाहर से. ओके. एंड होम्योस्टैसिस दस मेंटेन होगा, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होगा ब्लड में. सो मेटाबोलाइट्स, फीडबैक कंट्रोल बाय मेटाबोलाइट्स. मेटाबोलाइट हियर कौन सा है, ग्लूकोज. ग्लूकोज इज द मेटाबोलाइट. ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है इसीलिए इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है और ग्लूकोज अंदर जाता है सेल में एंड ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो जाता है ब्लड में.
means isn't it responsible for homeostasis? Okay, so feedback control by metabolites. Here metabolite example glucose. ठीक है, and for glucagon, what will be the metabolite? Glycogen will be the metabolite. Getting me? आपको समझ रहा है स्टूडेंट्स मैं क्या बात कर रही हूँ? ओके, फीडबैक कंट्रोल बाय नर्व्स, अभी अभी बोला मैंने, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल में रखता है, अदरवाइज एक दो हार्ट बीट आ जाता, इजंट इट? और पर्सन थोड़ी जिंदा रहता है इतना कम हार्ट बीट हो जाता तो। पैरासिम्पैथेटिक के एक्टिव हो रहा है बार बार, और सिंपैथेटिक ही एक्टिव हो रहा है, हार्ट बीट गया और ज्यादा बढ़ गया, हार्ट अटैक से मर गया। सो बैलेंस रखते हैं बॉडी। सी हाउ डिजाइनिंग ऑफ आवर बॉडी इज देयर, इजंट इट? और बहुत सारे लोग एडिक्ट हो जाते हैं, ड्रिंक स्मोकिंग करते हैं, कुछ भी ड्रग्स एडिक्शन करते हैं और करवाते भी है। सो इट्स नॉट गुड, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। लोकल हॉर्मोन्स, फेरोमोन्स एंड इंसेक्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आपको कॉकरोच तो पढ़ाया होगा ना, तो कॉकरोच में हॉर्मोन्स रहते हैं। अरे पढ़ाया, ठीक है। कॉकरोच का, कॉकरोच में हॉर्मोन्स रहते हैं, एक डायसिन हार्मोन, फेरोमोन्स एंड ऑल। ओके, फेरोमोन्स कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। हम्म, और वो अट्रैक्ट करते हैं अपोजिट सेक्स को फॉर कॉपुलेशन पर्पस। सो ऐसे कुछ ऐसे हॉर्मोन्स है, okay, which will have specific effect, and local hormones which are there, local means वहां पे ही, जैसे कि बॉम्बे में लोकल ट्रेन चलती है मुंबई में, राइट? ओनली इन मुंबई इट इज, और बाकी के दूसरे रीजन में नहीं चलता है, राइट? सो ओनली इन दैट एरिया that local hormones will have effect, not over the uh, other target organ which is located very far from that area where it is produced. ठीक है, एफएसएच एलएच तो बहुत दूर है ना, पिट्यूटरी कहाँ और ओवरी कहाँ एंड टेस्टिस कहाँ, राइट? सो लोकल हॉर्मोन्स वहीं पे सिक्रेट करेंगे और वहीं पे इफेक्ट दिखाएंगे, ठीक है? So local tissue hormone or ectocoids. Other name for local tissue hormone is ectocoids. क्या व्हाट्सएप पे कितने मैसेजेस आते हैं? So short-lived local tissue hormones or ectocoids, short-lived as many, short-lived रहता है वो, सिक्रेट होता है कम, हॉर्मोन्स तो कम ही सिक्रेट होता है ना, लो कॉन्सेंट्रेशन में ही सिक्रेट होता है, और जैसे सिक्रेट होने के बाद वो इफेक्ट दिखाएगा तुरंत और इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, डीनेचर हो जाएगा हार्मोन। लोकल हार्मोन के बारे में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? सो शॉर्ट लाइफ एज मेनी एंजाइम्स प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड डिग्रेड्स देम। ओके, सो बहुत सारे एंजाइम्स जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में रहते हैं वो डिग्रेड कर देते हैं उसको। यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड क्या रहेगा हॉर्मोन्स का? ब्लड रहेगा ना, ब्लड रह सकता है, लिम्फ रह सकता है। ओके, समझ में आया? सो उसमें कुछ एंजाइम्स रहते हैं बिकॉज ऑफ विच दिस लोकल हॉर्मोन्स गेट डिस्ट्रॉयड वंस दे हैव द इफेक्ट ओवर द सेल, ठीक है? सो these compounds which are there, local hormones which are there, these are stimulated by physical or chemical stimulus, physical chemical stimulus की वजह से वो stimulate हो जाते हैं। So once stimulated they get activated in the extracellular fluid। So क्या करता है वो लोकल हॉर्मोन्स?
It transmits the coded information of metabolic adjustments between the neighboring cells. Okay, so neighboring cells के आजू बाजू में इसको मैसेज देता है, जैसे कि हम लोग बाजू वाले को मैसेज देता है, अरे पानी गया है, पानी भर के रखो, वैसे ये मैसेज देगा. ठीक है. So local hormones which are there, these are of two categories: paracrine hormones and autocrine hormones. Okay, paracrine hormones, देखो यहाँ पे अभी paracrine hormone क्या करता है? It brings about changes in the metabolic activity of the cell. Okay, how? By secreting certain chemicals. Okay, so neighboring hormones के ऊपर वो इफेक्ट दिखा, neighboring cells के ऊपर वो इफेक्ट दिखाएगा. ठीक है, समझ में आया? So once supposing एक XYZ cell है, वो secrete कर रहा है secretion, and that secretion which is there, it will have effect over the neighboring cells. So located in the neighborhood of paracrine hormones affects the metabolism of the cell. Located in the neighborhood of those which क्या रहेगा इधर? Secretes them. Which secretes them. Isn't it? For example, यहाँ पे सपोजिंग ये एक सेल है, ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस किए, और उसके आजू बाजू में दूसरे सेल्स हैं. Okay, so this whatever secretion which is produced by this cell will have effect over the neighboring cells. Okay, so what effect? It will affect the metabolism of the cell. ये effect दिखाएगा. So these secretions are affecting the functioning of these neighboring cells. Paracrine का. Autocrine affects the metabolism of every cells which secrete them. Okay, so cell के अंदर ही वो secrete होगा और सेल में ही चेंजेस करवाएगा. स्वार्थी है ना? सेल्फिश. खुद ही बना रहा है और खुद का चेंजेस कर रहा है, दूसरों का पता नहीं है. दूसरे पैराग्राइन है ना, और पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस है, मेरा हार्मोन्स क्यों चाहिए? ये हो गया ऑटोक्राइन. Okay, so tell me two categories of hormones which we have studied. Local hormones. बोलो बोलो. अरे लोकल हॉर्मोन्स की दो कैटेगरीज अभी सिखाया मैंने, वहीं पे इफेक्ट दिखाते हैं, वो वाले लोकल हॉर्मोन्स रहते हैं. यस, पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन. ओके, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन. पैराक्राइन क्या है? सेल सिक्रेट करवाता है ना, सिक्रेशन, और उसका इफेक्ट बाजू वाले के ऊपर होता है. सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, बाजू में बैठा है, वो सिगरेट स्मोकिंग नहीं करता है, बट तकलीफ किसको हो रहा है? बाजू में बैठा है जो सिगरेट नहीं स्मोक कर रहा है उसको, है ना? सिगरेट स्मोक कर रहा है उसको भी होता है, बट वो एंजॉय करता है तभी. एंड ऑटोक्राइन affects own cells, bring about changes depending upon what type of requirement it is. ठीक है. नेहा राइट, तीर्था राइट, नेहा, तीर्था राइट. ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन सुना होगा ना आपने? प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, वो हार्मोन भी है. एंड प्रोस्टाग्लैंडिन इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स. ठीक है. सो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, इट इज अ पैराक्राइन हार्मोन, प्रोस्टाग्लैंडिन. और अभी एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे लिखा है,
ऑटोक्राइन का, इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन 1 ऑटोक्राइन हार्मोन है। अभी फेरोमोन्स, फेरोमोन्स थोड़ा बहुत आइडिया दिया था इसके बारे में मैंने अभी। These are the chemicals, or else you can say hormones. ये ना, hormones are chemicals which are produced by one animal to the exterior. बाहर की तरफ वो secrete होता है body में से, but evoke a physiological or behavior response in another animal of the same species. ओके मैंने आपको बोला ना वो सीक्रेट क्यों होता है, टू अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स फॉर कोपुलेशन पर्पस। ठीक है, सो रिमेम्बर अभी तक जो हार्मोन्स हम लोग ने स्टडी किए वो तो बॉडी के अंदर सीक्रेट हो रहे हैं ना, ये बाहर सीक्रेट होता है फेरोमोन्स। सो क्वेश्चन अगर आया विच आर द हार्मोन्स विच आर सीक्रेटेड आउटसाइड द बॉडी and bring about physiological and behavioral change in another animal. So those are pheromones. They are physiological and behavioral change उसमें नहीं दिखाई दे रहा है जो कि secrete कर रहे हैं, उसमें नहीं दिखाई दे रहा है, वो इफेक्ट करवाता है दूसरे एनिमल के ऊपर। ठीक है, it attracts the opposite sex. So these pheromones some are released by the body surface and leaked by the recipient. Okay. So most pheromones are volatile and odorous fatty acids. Remember, fatty acid hormone भी मैंने सिखाया था आपको। So pheromones are fatty acid hormones. Remember this. Volatile, whenever they are produced, they will get evaporated. You will not see the secretions, right? So recipient receive the pheromones through olfaction. Olfactory lobes will analyze that smell, volatile substance, and likewise that insect will get attracted to the opposite sex. So some insects secrete bombacol or else glyph क्या स्पेल करने का उसको, Diplure to attract their mating partners. This I have explained. So now insect endocrine glands, उसमें हम लोग जो स्टडी करते हैं 11th स्टैंडर्ड में, that is what स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में पहले सबसे डिटेल में जो टॉपिक है वो कॉकरोच का है। ठीक है, so let's study different hormones which are produced by the cockroach. So देखो कॉकरोच में बहुत सारे ग्लैंड्स रहते हैं जो कि एंडोक्राइन इन फंक्शन है। So we'll mark it out. First is intercerebral gland cells. Okay, आपको समझ में आया फेरोमोन्स? बोलिए, फेरोमोन समझा सबको? ओके intercerebral gland cells, then ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड कॉर्पोरा कार्डियाका, कॉर्पोरा कार्डियाका। थर्ड कॉर्पोरा अलाटा, अलाटा, अलांटा नहीं है वो अलाटा है। फोर्थ प्रोथोरैसिक ग्लैंड्स, प्रोथोरैसिक ग्लैंड्स, प्रो है ये। ठीक है, हाँ, सो टोटल 4 ग्लैंड्स विल बी लर्निंग। इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट आपको स्किप नहीं करना है बिकॉज आपको तो पता है कुछ भी पूछा जा सकता है, बट लास्ट में करना है, वैसे भी लास्ट ही है।
इंटरसेल्युलर क्या बोलूं मैं, इंटरसेरेब्रल है ना, एक मिनट, intercerebral gland cells where they are lying, inter means between, cerebral gland, cerebral is a word for brain, so brain में located रहेंगे वो. आपको पता है कॉकरोच में दो गैंग्लिया रहते हैं ना, सेरेब्रल गैंग्लिया, that is supra esophageal ganglia, sub esophageal ganglia, बराबर. so two cerebral ganglia के बीच में रहता है ये intercerebral gland. That's why the name given is intercerebral because it is present between the two cerebral ganglia. ठीक है? So it secretes hormone. Hormone क्या secrete करता है? Brain hormone. Brain hormone secrete करेगा because cerebral ganglia के बीच में located है. मैं तुझे जगह देता हूँ, cerebral ganglia बोलता है, but मेरा ही hormone secrete करना पड़ेगा. ऐसे याद रखो, intercerebral है means brain hormone बनाएगा वो. ब्रेन हार्मोन क्या करता है? इट एक्टिवेट्स वन ग्लैंड, विच इज द ग्लैंड? प्रोथोरैसिक ग्लैंड. प्रोथोरैसिक ग्लैंड, ओके. प्रोथोरैसिक ग्लैंड को वो स्टिमुलेट करेगा एंड प्रोथोरैसिक ग्लैंड विल देन स्टार्ट सिक्रीटिंग वन हार्मोन which is molting hormone, and that molting hormone is igdaisen. Igdaisen. So in igdaisen hormone. ठीक है, समझा? फिर से रिपीट करती हूँ. इंटरसेरेब्रल गैंग्लिया, इंटरसेरेब्रल ग्लैंड्स आर लोकेटेड in between the cerebral ganglia. Okay, that's why they are producing brain hormone. Brain hormone will act over the prothoracic glands. Prothoracic glands को stimulate करेगा brain hormone to produce molting hormone, that is igdaisen. Igdaisen. Igdaisen is a molting hormone which is responsible for the growth of the nymph. Nymph is the developing small baby cockroach. Okay? Chota cockroach, which is having, what is that? Which is having vestigial wings. Vestigial wings रहता है and reproductive system is not developed. Baby cockroach है ना वो. समझ में आया? सो निम्फ का मोल्टिंग हो के 13 बार मोल्टिंग होता है, पता है ना आपको? 13 to 14 times molting takes place and adult cockroach will be formed out of that. Okay, दिमाग लगाया बेबी कॉकरोच को एडल्ट कॉकरोच में बनाने के लिए, दिमाग लगाया. किसने? किसने दिमाग लगाया? इंटरसेरेब्रल ग्लैंड. क्या बना के? ब्रेन हार्मोन. ब्रेन हार्मोन में ने किसके ऊपर इफेक्ट दिखाया? प्रोथोरैसिक ग्लैंड्स. वेयर दे आर लोकेटेड? प्रोथोरैसिक ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड रहेंगे? प्रोथोरैक्स रीजन में, isn't it? Prothorax, mesothorax, metathorax, these are the three regions of the thorax of cockroach. Okay, आई बात समझ में? आगे जाते हैं. कॉर्पोरा कार्डियाका, थोड़ा ही बाकी है स्टूडेंट्स. कॉर्पोरा कार्डियाका क्या करता है? इट इज रॉड लाइक. हाउ इट इज रॉड लाइक एंड वेर इट इज लोकेटेड? ऑन द साइड्स ऑफ द esophagus. Okay, which secretes growth hormone. Growth hormone secrete करेगा. समझ में आया? ये ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ ट्रिक नहीं है. देन कॉर्पोरा अलाटा. कॉर्पोरा अलाटा क्या करता है? इट सीक्रेट्स जुवेनाइल हार्मोन इन लिम्फल स्टेज. सो लिम्फल स्टेज में जो डेवलपमेंट होता है, मीन्स जो कुछ भी कैरेक्टर डेवलप होता है निम्फ में, इट इज बिकॉज ऑफ दिस secretion juvenile hormone which is produced by corpora allata. Okay, and where it is located? Corpora allata, it is located
near to the corpora cardiaca. Okay, so ये क्या है, क्लोज लिखा है, क्लोज टू corpora cardiaca. ठीक है. सो इन द लास्ट लिम्फल स्टेज, जब भी लिम्फ का एडल्ट में कन्वर्जन होता है, मीन्स लास्ट मोल्टिंग स्टेज रहता है ना, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, दिस corpora अलाटा बिकम्स इनएक्टिव, इनएक्टिव हो जाता है. और जैसे ही एडल्ट कॉकरोच बन जाता है, दिस corpora alata again becomes active and then it will start producing gonadotropic hormone. Gonadotropic hormone means sex hormones. ओके, समझ में आया? सो फिर से रिपीट करते हैं, कॉर्पोरा कार्डिया का माल्टिंग नहीं, मोल्टिंग. ये मोल्टिंग है. और ये जो आपने लिखा ना, ये MALTING इज डिफरेंट. दिस इज माल्टिंग. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आप स्टडी करोगे, अल्कोहल बनाते हैं ना, तभी बार्ली के ग्रेन्स जो है वो सोक करते हैं वाटर में, एंड देन हाफली वो जर्मिनेट हो जाने के बाद उसका क्रशिंग करते हैं. हाफ जर्मिनेशन के बाद उसका ड्राइंग किया जाता है एंड देन इट इज क्रश्ड, हाफ जर्मिनेटेड बार्ली सीड्स. दैट प्रोसेस इज नोन एज माल्टिंग. ओके, एंड मोल्टिंग means replacement of the epidermis by new epidermal cells. That is molting. And nymph is baby cockroach, छोटा cockroach जिसमें vestigial wing रहता है, and rudimentary reproductive system, not functional reproductive system. समझा नेहा? नेहा understood? So corpora cardiaca and corpora alata दोनों नजदीक लोकेटेड है. ओके, वेयर इट इज लोकेटेड, कॉर्पोरा कार्डियाका एट द साइड्स ऑफ द इसोफेगस. सो नजदीक है तो इसोफेगस के नजदीक दो ग्लैंड्स रहेंगे, कॉर्पोरा कार्डियाका एंड कॉर्पोरा अलाटा. ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्पोरा कार्डियाका? इट ब्रिंग्स अबाउट ग्रोथ ऑफ, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बॉडी ऑफ कॉकरोच. ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है. जुवेनाइल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्पोरा अलाटा. ओके, जुवेनाइल हार्मोन क्यों बोला है? बिकॉज वो निम्फल स्टेज में जो कुछ भी डेवलपमेंट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए जुवेनाइल हार्मोन. ठीक है. एंड जैसे ही निम्फ का एडल्ट कॉकरोच में कन्वर्जन होता है, मीन्स 13 है तो 14 मोल्टिंग स्टेज में जाता है, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, this hormone, juvenile hormone, stops its production. This gland will stop its secretion. Okay, juvenile hormone will no more be produced because अभी adult हो गया, cockroach होने वाला है. ठीक है. So now adult cockroach जैसे ही बन जाता है, then it will again activate and starts producing gonadotropic hormone, that is sex hormone. Okay. So how many glands we have studied of cockroach? 4. Intercerebral gland, corpora cardiaca, corpora alata and prothoracic gland. 4 ग्लैंड देखे हम लोग. सो आज का आज तुम लोग ये रिवाइज कर लोगे, जो कुछ भी टॉपिक है वो मैं रात तक भेज देती हूँ नोट्स. वी हैव फिनिश विद केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सबको समझ में आया जो टॉपिक मैंने सिखाया आपको? वो nymph, अरे nymph is the छोटा कॉकरोच, बेबी कॉकरोच. ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्पोरा. ग्रोथ हार्मोन नहीं, जुवेनाइल हार्मोन. देखो जुवेनाइल हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन एक्चुअली वन एंड द सेम करेंगे वो, बट केमिकली वो डिफरेंट है. समझ में आया क्या? इफेक्ट तो सेम ही दिखा रहे हैं ना वो. सो
have you all finished with whatever lectures we have done regarding chemical control and coordination? अभी तक जितना भी मैंने आपको सिखाया उतना सब रीड करके हो गया है सबका? तेजीत, आप आंसर नहीं देते हो. यश, युगशान, आपको समझ में आया है सब? खुशी? ओके, अच्छे से रिवाइज कर लो. नो बैकलॉग, नथिंग. एनसीईआरटी बुक इज भगवान फॉर ऑल ऑफ यू. एनसीईआरटी पढ़ना है, मेरे नोट्स पढ़ने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं. 40 मिनट्स, सॉरी 30 मिनट्स में 40 एमसीक्यूज, दैट शुड बी द टारगेट. ओके, ऐसे मत समझो कि अभी का पेपर इजी था तो कुछ टेंशन नहीं, एनसीईआरटी करो हो गया. ऐसे लुकआउट मत रखो. जो एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं वो भी करना है. यस चेल्सी, गुड. ओके चलो, आई एंड द मीटिंग. हाँ, 1 मिनट. प्रेजेंटी, 1 मिनट. हाँ, ओके. अर्चना, Present, ma'am. आर्या, Present, ma'am. आशिता, आशिता, भव्या. Present, ma'am. आशिता को बात नहीं करना है क्या मेरे से? चैत्रा, Present, ma'am. खुशी, Present, ma'am. नेहा, Present, ma'am. निहारिका, Present, ma'am. निहारिका. स्पेल किया तो मुझे वो सिंगर का याद आता है. देन पृथ्वी, पार्थिव. प्रेजेंट मैम. देन और कौन है? प्राची, प्राची, नेहा, स्नेहा, स्नेहा, Present, ma'am. Present, ma'am. तीर्था, Present, ma'am. यश, प्रेजेंट मैम. युगशान, प्रेजेंट मैम. जय देसाई, जय प्रेजेंट, एंड श्रीजीत. Right? Anyone left? Yes, ma'am. Okay. कौन बाकी है? नहीं ना, हो गया ना? Ma'am, हाँ, ऋतुजा बाकी है, राइट. और चेल्सी. ठीक है, फाइन. We'll end the meeting. Thank you students. Have a nice day. Bye bye.